When we were starting out comedy, our biggest stress point used to be to find the shortest possible sentence to get to a punchline. Now my stress is that my punchline might lead me to a sentence. You guys might have noticed that we are living in slightly intolerant times. नहीं, अगर नोटिस नहीं हुआ लोड मत लेना, बहुत सटल है, पता ही नहीं चलता. Just like कोरोना. तो इंडिया में एक आंदोलन चल रहा है, जोक मारो तो तुम्हें मारेंगे. And I genuinely feel as artists, as youth, as the citizens of this country, if we raise our voices together, we can make a difference. Do you agree? I just don't want to be the first one to do so. मैंने कभी बचपन में सपना नहीं देखा था कि मैं बड़े होके ट्रेंडिंग हैशटैग बनूंगी. तो मैंने ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिए टू क्विट थिंग्स दैट आर बैड फॉर मी, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू गिव अप शुगर एंड आई एम ट्राइंग टू गिव अप गिविंग एन ओपिनियन. नहीं, शुगर खाओ ना तो फिर भी जिंदा रह सकते हो. I am so committed to giving up my opinion. मैंने खुद का ब्रॉडबैंड स्लो करवा लिया है कि कहीं भावनाओं में बह के ट्वीट किया, इट्स लाइक सेंडिंग सेव टू ड्राफ्ट्स फोल्डर. अरे लोग मेरे को लिखते हैं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द कंट्री, व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन इट? नीति पाल्टा, डर गई. हाँ, fans are like, don't worry ma'am, aap bolo, we are standing right behind you. I'd feel better if you were standing in front of me. अरे यार, have you seen FIR पे FIR lodge हो रही है? It's almost like they think FIR stands for fear. Now तो इतने हो गए कि I'm beginning to think maybe it's a nice thing they're doing, you know. Maybe it's not anti-comedian or anti-activist. Maybe it's just pro-housing. One way to put a roof over everybody's head. तो देखो ऐसा है कि you know, when we were starting out comedy, our biggest stress point used to be to find the shortest possible sentence to get to a punchline. Now my stress is that my punchline might lead me to a sentence. तो बस मेरे से ना तुम लोग एक्सपेक्ट ही मत करना. मैं तो डिसाइडेड हूँ कि आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. आई एम वेरी क्लियर, मैं नहीं हूँ क्रांतिकारी. मुझे करना ही नहीं जेल भरो आंदोलन. ये माइक है, मशाल नहीं. So there will never be brave statements from me like, you know, I will never back down from this fight. If I back down, मेरा नाम बदल देना. Because changing names is their core competency. I like my name. नीति पाल्टा. Don't want it to become कैदी नंबर 102. तो मैं तो जी आई हैव डिसाइडेड आई विल डू जोक्स ओनली ऑन माई फैमिली. क्योंकि जेल वो कराएंगे तो बेल भी वही कराएंगे. तो ना मैं एक सेफ जोक लिख के लाई हूँ. आई एम नॉट श्योर व्हाट सेफ एनीमोर, बट आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट. ओके. व्हाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड? मत्था टेकने के लिए. हाँ ठीक है, नहीं है फनी, पर क्या तुम्हारी हंसी के लिए जेल जाऊं मैं? I swear, even while posting posts these days, the key I use most often on my laptop is backspace. So there are some tweets I thought of, guys, only thought of. जुर्रत नहीं हुई टाइप करने की. तो I might share them with you, but you can't take offense because I never ever put them out. तो कीवर्ड सर्च मारोगे तो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? Ready? Okay. India has one of the fastest vaccination drives of the world. Naturally, our government is bloody good at poking people. There was an FIR lodged against Mirzapur for showing UP cops in a bad light. End of joke.
देखो इससे पहले आप लोग जज करो, ऐसा नहीं है that I'm not into adventure sports, okay? I've done it all, bungee jumping, parasailing. But see, these come with safety backup equipment. What is the backup on this adventure sport? Anticipatory bail? आजकल तो वो भी नहीं मिलती. तो अब देखो, so far you guys think I'm a decent person, right? इतना मत सोचो यार. बट कहीं ना कहीं देखो, सबको कहीं ना कहीं बुरे ख्याल आते हैं, राइट? तो मुझे भी एक बुरा ख्याल आया है. ऑफ कोर्स कि बहुत ही बुरा हुआ कि मुनव्वर को जेल हुई. इट्स अ टेरिबल थिंग कि मुनव्वर को जेल हुई, बहुत बुरा हुआ. बट यार वो बहुत फेमस भी हो गया. तो कहीं मेरे दिमाग में चल रहा है कपल ऑफ मंथ्स ऑफ जेल वर्सेस इटर्नल फेम. I was like, oh shit, I'm actually considering getting myself locked up for fame. I am a bloody Big Boss contestant. But you know what's funny? जितनी complaints comedy के against है, उतने लोग नहीं आते हमारे shows पे. तो I'm तो thinking थोड़ी बहुत controversy कर लेती हूँ ताकि मेरी टिकटें तो बिके, क्योंकि आधी तो ये लोग खरीदेंगे. They will come for the show, cops on speed dial. I'll walk on, they'll be like, देखते हैं क्या कहती है. I'll take mic, look them in the eyes and go, why did the chicken cross the road? Hashtag Jesui, not Charlie. Hashtag Jesui, pak pak. Any lawyers here? Oh. Are you laughing because धंधा मिलने वाला है? बता दो. नहीं यार, according to me there should be some sort of a way to ensure that only comedy loving fans come for comedy shows. You know, like when you click on the ticket link, some sort of a captcha should pop up. Are you a troll? If not, click 6 things you're not offended by. Wait, there's a final test. Matlab ultimate Agni Pariksha, which is basically you have to unjumble the following sentence and type it out in all caps. And when they unjumble it, it reads, I support free speech. I am so scarred right now कि मैं, if I go to KFC and order a bucket of wings, I'm like, भैया please, no right wings. And as you know, right, comedy obviously comes from a deep place within, you know, a need to say what you feel. So I do want to say something about that's going on in my country right now. Why did the chicken cross the road?